Good morning, students. Today we'll be studying about families of line. Now, what is families of line? We'll get back to that. But families of line basically, okay, let me be very clear to you guys. Family of line basically means parallel lines, intersecting lines. These are called families of lines. For example, intersecting lines. Okay, they are called families of line, parallel lines, perpendicular lines. Okay, so this all are called families of line, but we'll see how to make an equation when lines are given. Okay, so when we start doing this topic, you guys already know the equation of a topic of any line can always be written as ax plus by plus c equals to 0. This is what the equation of a line: ax plus by plus c equals to 0. And you guys can see this can become a line if one of them is non-zero. Let's say, okay, just forget that. For example, this can also make a line x is equals to 34. This can also make a line that is parallel to x-axis, or sorry, parallel to y-axis. Y is equals to or 3y equals minus 7 equals to 0. Okay, this can also make a equation. Okay, this can also make a line on a graph. Okay, so basically the form of a graph or the form of a line, the linear form is ax plus by plus c. Okay, now you might be thinking there are how many? Three variables. Okay, that changes. Okay, a b c, that changes. These are the coefficient of x and y. Okay, these are the coefficients of x and y. But in order to understand this topic, so on dividing this equation by a, if I divide this equation by a, so how many arbitrary constant I am getting? Constant, ये constant होते हैं basically ना, variable are x and y. Okay, and these are called constant. अगर मैं ऐसी equation, simple equation में देखूं, I have how many constant? 1 2 3. Constant का मतलब क्या होता है? जैसे 3x plus 5y plus 7 equals to 0. So these are never going to change. These are constant. ओके, सो हम सोचते हैं कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? हम सोचते हैं कि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बट एक्चुअली हम पे 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं. ओके ओके, और बेसिकली कांस्टेंट टर्म कितनी होती है हम पे? 2 ही होती है. सो अगर मैं ऐसे पुट करूँ x प्लस इसका नाम b y प्लस c इक्वल्स टू 0, तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं मेरे पास जहाँ पे नंबर लग सकते हैं? 1 2, कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं मेरे पे हमेशा जब भी हम लाइंस की बात करते हैं. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. ओके, सो b, अगर मैं इसमें बस b की वैल्यू देखिए एग्जांपल से पहले हम ये देखते हैं. अगर b अपॉन a, b की वैल्यू क्या है इसमें? b अपॉन a. ओके, और c की वैल्यू क्या है आपके पास? c अपॉन a. ओके, so how many arbitrary constant you have? Constant, how many constant do you have? 2 constant we have. Okay, you just need to remember this. Okay, so this is nothing related to that's going to come in the exercise, but why I am doing this? I am doing this in order to explain you guys what is one perimeter families of a line. Okay, so now you might have seen this equation. Okay, let's assume this equation. How many arbitrary constant are there? One thing, these two are called variable x and y. What is left? m and c. c क्या होता है आपको आपको पता है? c is what? Okay, the point over here on x axis or y axis. Okay, so that is c. M is what? M is the slope. You guys already know slope of any line. So these are two variable and this is called arbitrary constant. What are this called? Arbitrary constant. So if one is given, so the other की क्या आपके पास equation आ जाएगी? The other is gonna stay in the equation. Okay, so this is what we are gonna talk about in this exercise. ये x axis है, right? ये x axis है, ये x dash है, सबको पता है. ये y axis है और ये y dash है, सबको पता है. अब ये है इंटरसेप्ट, जहाँ पे भी लाइन जा रही है y एक्सेस को काट रही है, उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट. तो लेट्स से यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो यहाँ पे 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है. तो इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है? 2 पे. कहाँ हो रहा है इंटरसेप्ट? ये 2 है.
तो इसको 0,2 भी बोल सकते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. नाउ ऑल द लाइन्स आर गोइंग थ्रू दिस पॉइंट, यू गाइस कैन सी all the lines are going through this point. So what is the equation I can write out of this? I can write an equation y equals to mx plus 2. So this is always what? Intercept. x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो भी होता है ये इंटरसेप्ट की बात करता है. तो तभी जहाँ इंटरसेप्ट 2 में हो रहा था तो मैंने इंटरसेप्ट की जगह डाल दिया. सो व्हाट इज द इक्वेशन आई हैव, बट वाई आई डेंट कीप द वैल्यू ऑफ m, बिकॉज इसका अलग स्लोप होगा, इसका अलग स्लोप होगा, इन सब लाइंस का अलग अलग स्लोप होगा अगर आप देखोगे तो. ओके, सो इट्स गोना बी डिफरेंट. ओके, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्लोप्स, but all the lines are going through one point and that is called what? Y-intercept, that is point 2. Okay, so for all these lines, for all this line, which equation I can say? This equation can satisfy all the lines which are passing through this 0,2. Okay, so then I can write, so that's why we call families of line. What's the main topic of our class today? Families of line. Okay, you'll get to understand slowly. So this all these lines are passing through this point and this is called y-intercept. So for all the lines I can give, for all the lines in the families I can give a equation y equals to mx plus 2. ओके, ये तो हो गया जब एक पॉइंट से जाते हैं. तो इसके इक्वेशन का नाम भी क्या लिख सकता हूँ मैं? y equals to mx plus 2. इसका नाम भी क्या लिख सकता हूँ? y equals to mx plus 2, because all the lines are passing through 2 intercept. okay, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है. इन दिस इक्वेशन यू गैस कैन रियली सी दैट this is a set of lines. Okay, this equation is not going to come for only one line. This equation can satisfy 100 different lines. Wow, you are going to say how? This equation can be written for 100 different lines. I'm repeating my sentence again. Why? Please have a look now. Okay, C is over here, that's okay. Now what's going to happen? This is going to go on that side. C, let's say 3y equals to minus C. Okay, and 2x is going to go on that side, that is going to become minus 2. Okay, and 3 is getting multiplied over here, it's going to go on the other side and get divided. So y is equals to minus 2 over 3 x minus c over 3. Now if you guys have a look in this, okay, so it says जब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे ये स्लोप मिला हुआ है. व्हाट इज द स्लोप दैट इज गिवन टू मी? प्लीज हैव अ लुक. व्हाट इज द स्लोप? अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सो व्हाट इज सिटिंग इन प्लेस ऑफ m? हु इज सिटिंग इन प्लेस ऑफ m? माइनस 2/3. सो व्हाट्स माई स्लोप? माइनस 2/3. बट c कीप्स चेंजिंग. आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ c. c की जगह 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ. दिस इज द इंटरसेप्ट. Okay, so how are the lines going to go? This is same slope, this line also, sorry, when it is parallel to this line, ये नहीं है, ठीक है, this line parallel, this line parallel, this line parallel, this line parallel. Okay, all the lines parallel can have the same slope because they have the same angle, same angle, same angle, same angle, same angle. Slopes कब सेम होता है? जब एंगल सेम होता है. सो दिस स्लोप m इज सेम. सो आई कैन से फॉर दिस लाइन, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 x माइनस c/3. इसकी भी सेम हो सकती है, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 x माइनस c/3. इट्स गोना कीप चेंजिंग. ओके, व्हेन आई हैव द सेम m, ओके, उसमें मैंने क्या होता था आपके पास, जब हमारे पास सेम c होता है, ये वाला पार्ट सेम c, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे सेम c होता है, c सब में c सेम आएगा, तो हमारा m तो इंटरसेक्ट होंगे लाइन एक दूसरे को. ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. और जब हमारा m सेम होगा, सो आई कैन हैव सो मेनी नंबर्स लाइन्स ऑफ द सेम फैमिली दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, बट c कैन बी डिफरेंट. व्हाई डिडंट आई कीप द वैल्यू ऑफ c? बिकॉज आई डोंट हैव. सो जब मैं 2 पुट करूँगा तो मे बी ये वाली लाइन आएगी, जब मैं 3 पुट करूँगा तो ये वाली लाइन आएगी, बट द इक्वेशन इज गोइंग टू बी दिस. That's why this is called, the name of the topic is families of lines.
Okay, so we are talking about, okay, we are talking about intersecting lines, parallel lines. Okay, there are two things that we'll be learning right now. One is the equation, this ax plus by plus k, this is different, see, equals to 0 for different real values of k, represent a family of parallel lines to the lines ax plus by plus c equals to 0. Now you might be thinking this is just a theoretical sentence here, we are not able to understand anything. I would like you guys to focus on this sentence, this equation and this equation. What is the different thing you can see? I hope every one of you can see ax plus by is same, only this term is different. They are trying to say if two equations are identical, only the constant terms are different, then both of their lines are going to be parallel to each other. Why? I'll help you guys. अगर मैं आपको m ढूंढने बोलूं इस इक्वेशन से, m कैसे ढूंढते हैं हम लोग? You guys think about it. माइनस a ओवर b, ऐसे ही ढूंढते हैं हम लोग, माइनस a ओवर b, राइट? थिंक अबाउट इट. इसका m क्या होगा? m for this is going to be a over b, माइनस a over b, बिकॉज a over b होता है इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट, आप सबको पता है. सो आप देख रहे हो दोनों के m क्या है, m1 इक्वल्स टू m2. तो दोनों के स्लोप कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है. उसको c और k से जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे कोई लेना देना नहीं है. तो जब भी ऐसे दो इक्वेशन आए, इसका मतलब हमारे पास क्या है, दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है. ओके, I'll help you guys to understand two equation. For example, 3x plus 5y plus 7 equals to 0, इसकी एक लाइन बन सकती है. दूसरा क्या है, 3x plus 5y plus 9 और minus 9 equals to 0. So both of this equation are parallel to each other. I can just look at it and say both of the they are going to make a line on the graph and both of them are going to be parallel to each other. So इस equation की इस line की equation होगी 3x plus 5y plus 7, क्योंकि ये 7 से होके जा रही होगी, और इस equation की line होगी 3x plus 5y minus 9, क्योंकि ये 9 से होके जा रही होगी या minus 9 से होके जा रही होगी. But they will be parallel to each other. Why? Because I can say the what is same, m is same, slope is same. Okay, this another thing that I have written down and you guys need to understand this, a very small topic. Okay, the equation, this जब भी ऐसा इक्वेशन आए और ऐसा इक्वेशन आए, it means they are perpendicular to each other. Why? Because if you see what is the slope of this, slope क्या होगा इसका, slope is equals to this over this, x का कोफिशिएंट that is b over a माइनस बी ओवर ए माइनस ए, तो ये तो कट होके बी ओपन नहीं हो जाएगा. ठीक है, अब इसका स्लोप देखो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ए ओवर बी. तो दो स्लोप निकले आपके, पहला ये स्लोप निकला, दूसरा ये स्लोप निकला. तो आपको इन दोनों से क्या पता लगता है कि m1 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए एंड m2 इज इक्वल्स टू a upon b, isn't it? m1 is equals to a upon b and this is going to be a minus a. So my problem is agar, okay, this is minus a over b, sorry. Okay, so this is first slope equation, slope of this equation, and this is slope of the second equation. If you see both, I have kept, for this I have kept m1 and for this m2. So m1 is reciprocal of m2. So ये कब होता है, जब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ओके, ये कब होता है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सो दैट्स व्हाट फैमिलीज ऑफ लाइन की जब परपेंडिकुलर लाइन्स आएगी तब दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर गोना कम. ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन गोइंग टू बी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. ओके, थ्रू अ रफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 3x minus 5y plus k equals to 0. Okay, and the other equation that I'll have is 5x plus 3y plus, let's say यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है. So can you see what is the slope for this? How will you figure out the slope for this? The slope for this is going to be slope
m1 is going to be what, 3/5 -3/-5, माइनस तो लगता ही है पर 5 के पास माइनस है। m2 क्या होगा, -5/3। so when you cancel them out, ये 3/5 and -5/3, so this is reciprocal of this। और ये कब होता है, जब two lines are perpendicular to each other। okay, I hope you guys are getting it। okay, one last thing that we need to learn from this exercise is that when lines are passing through a common point, for example, all these lines are passing through a common point, okay, this is the point, and there are lots of lines passing through this point. So how to make an equation out of it? So I'll just take two lines right now. I'll take this line L1 and I'll take this line L2. Let's say L1 is it's in the form of an equation a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0, and L2 is equals to a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So this is first equation and this is the second equation. This is the equation of the first line and this is the equation of the second line. Now what to do when I have two equation of two lines? Using these two lines I can make equation of any line that is passing by this using these two lines. So what is the formula? I'll directly go to the formula, that is L1 plus 2L2 equals to 0 होना चाहिए. This is the equation that I'm going to use. Okay, if you want to go completely thoroughly through this, please go on page number 747 and read that out. You'll be able to understand. That's not hard. Okay, so we'll solve some questions on this as well. Okay, we'll try solving some questions on this. Okay, one or two from the exercise. So when I have this line and this line, and if I have to find any other equation, okay, so this is k, sorry, this is going to be k, this is constant term, any constant term, तो मेरा 0 आएगा. It can be -2, -3, -4. Okay, so this is the formula that I have to use. Okay, let's try doing some of the questions from the exercise from your homework. Okay, I have to write an equation. Let's try solving questions from the example as you guys requested if I can do some questions from the exercise. So here we go. First question says write the equation of the families of a line with y-intercept -3. I know a very it's a very obvious equation that I know, that is y equals to mx plus c. Now intercept, this is intercept and this is slope, but something else is given to me. So what is given to me? Y-intercept is given to me -3. So what I'm going to do, y equals to mx minus 3. So this is the equation that we have been looking for. That's my answer. Okay, even if you guys are not able to do this, what you guys can do that is you can use whatever you know. Okay, so if you guys know the slope formula, what is the slope formula? Y, okay, y minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, or you can also write y1 minus y minus y1 and x minus x1. You can use this formula also, and this from the basic thing you can shift this over there and this can be over here, and you know x is going to be 0, y is going to be 0, 1 y is going to be 0 because y-intercept hai. So like that you can end up getting this equation as well. Okay, but I'm going to use this directly because I know that the equation is this. Okay, when y-intercept is given I'm going to use this. Okay, let's see the fourth part. What does the fourth part say? Fourth part says perpendicular line का हमें equation find करना है. So perpendicular to 3x plus 7y equals to 8. बोलना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि एक लाइन है ऐसे करके, इस इक्वेशन का नाम है 3x plus 7y equals to 8. अब एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन से. So I have to find the equation of this line. Now you might be thinking how to find the equation of this line. You know that what is m for this. Okay, if I shift everything on one side, 7y minus 8 equals to 0. What is the slope for this? The slope for this is -3/7, right? Now जो मैं ये निकालूंगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा. तो m1 का स्लोप तो -3/7 है. ठीक है,
दूसरे वाले का स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, ओके, m2 का कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला होता है m1 इक्वल्स टू -1/m2। तो आपको ये पता है, तो यहाँ पे -3/7 लिख दिया, -3/7 इक्वल्स टू -1/m2। सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल्ड आउट, m2 ऊपर आ जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, 7/3। सो आपके पास कितना आ गया, m2 7/3, मतलब इसका जो आपका m है वो है 7/3। तो ये क्या होता है, a, ये होता है b। सो आई एम गोइंग टू राइट अ इक्वेशन नाउ, प्लीज हैव अ लुक ओवर। सो ऐसे होता है ना, वैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इधर क्या आएगा आपका, a की जगह क्या आएगा 7, प्लस b की जगह क्या आएगा 3, प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो मुझे पता नहीं लगा, तो इसको बोलेंगे पैरामीटर। जो हमें पता नहीं लग रहा है उसको बोलेंगे पैरामीटर। यहाँ पे मुझे c की वैल्यू पता थी, m की वैल्यू नहीं पता थी, तो इसको हम बोलेंगे m इज पैरामीटर। इन दिस इक्वेशन m इज पैरामीटर, whatever, that's why the name of this the subtopic of this topic is also finding the parameter. Okay, so that's how you do this type of questions. Okay, let's have a look at question number 3. Find the equation of a straight line perpendicular to 2x minus 5y plus 3 equals to 0, having x-intercept -4. So we'll do our solution, but before doing, I'll just imagine what I have to do. I have a perpendicular, two perpendicular line. This line equation I have given, this they have given it to me, that is 2x minus 5y plus 3 equals to 0. Is that okay? And they said इंटरसेप्ट क्या है -4, x पे इंटरसेप्ट हो रहा है -4 पे, x इंटरसेप्ट -4, सो दैट अगर ये या ये x की लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे -4 पे इंटरसेप्ट हो रहा है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, बट जब y इंटरसेप्ट होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, mx प्लस सी। पर जब x से इंटरसेप्ट होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, mx प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूजुअली यूज फॉर x intercept. Okay, so I'm going to use this, but I need to find m. So let's see what is m for this. What is m for this equation? What is the m or slope of this line? So slope of this line is going to be -2 over -5. That is going to be m is equals to 2 over 5. Okay, so what is m for this line going to be? M for this line is going to be reciprocal of this and negative of this. So minus 5.2. रेसिप्रोकल ऑफ दिस, बिकॉज परपेंडिकुलर में तो ऐसे ही होता है, अगर आपको नहीं पता है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इस फॉर्मूले में m1 की वैल्यू पुट कर देना, आपको m2 निकल जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्या होता है आंसर, ठीक है, इस फॉर्मूले में। सो आई एम गोना पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस। सो y इक्वल्स टू m इज -5/2 x and this is -4. You know, this is always intercept, x intercept, y intercept, and then 2 is going to go on that side. 2y equals to -5x plus 20. I hope you all agree with me. Now if I shift everything on one side, so I'll get 5x plus 2y minus 20 equals to 0. This is the equation that I had to find, and this is the equation of this line. So that's how we make a equation of the line that you have to make, that is perpendicular to the given line. You guys can look at this video again and again, and rewind this video and see this. You'll understand this question, how this question is done. Let's try and understand this question. Okay, this is question number 5 that we'll be doing. Find the equation of the straight line through the point of intersection of the lines this, and which is parallel to this. Now this is really confusing for some of you guys, but I will explain you with the help of a diagram. But I really want you guys to understand that if I am explaining you with the help of a diagram, whenever you do any question, try understanding with the help of a diagram. Okay, so here we go. Here's the solution that I'll give you. So they said find the equation of a straight line through the point of intersection. So there are two lines already, this one and this one. Okay, so the equation of this line is, let's say, x plus 2y equals to 3. The equation of this line is 4x
minus y plus 7 equals to 0. Now they are telling me कि Gautam, find the equation of a straight line passing through the intersection. Find the equation of this line. I have to find this line, equation of this line जो मैं dotted line बना रहा हूँ, which is passing through the intersection of these two lines. I hope this would make it clear for you. So I have to find the equation of this line first thing. ठीक है. Now बट उन्होंने बोला कि अगर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड करनी है, उन्होंने हल्की सी हेल्प कर दी कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, और ये क्या है 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13. अगर ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब जो इसका m होगा वही इसका m होगा. फर्स्ट थिंग. ओके, लेट्स ट्राई फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. रेडी एवरीवन? मैंने आपको बताया था जब ढेर सारी लाइन एक जगह से पास होती है तो हमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं और दोनों के लिए इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, L1 प्लस के L2 शुड बी इक्वल्स टू 0. Whenever you see this type of question, two lines are given and you have to find the equation of the third line, then you have to use this formula. How? I'll help you guys. L1 is 4x minus y plus 7. Okay, this is L1. Second one is plus k of bracket x plus 2y sorry, just to be clear that this is L1 and this is L2, okay, because this is given first. So x plus 2y minus 3 plus k, and L2 is 4x minus y plus 7. It won't make any difference, just to be very thorough with the things that I am doing for you, then it's going to be really helpful. Okay, so it's going to be x plus 2y minus 3 plus 4kx minus yk plus 7k. Now I'm going to take the x and the x terms together. So x plus 4kx plus 2y minus yk minus 3 plus 7k equals to 0. Okay, and then x is common in both of them, so I'll get 1 plus 4k. In this y is common, I'll take plus, so 2 minus k is left, and this is going to be just like that. Okay, so this is the equation that is being formed for what? For this line. This is the equation for this line. That's how you make an equation for this line. Anyhow, so this is the equation I got. Okay, this is the equation for which line? For this line. बस मुझे k की वैल्यू मिल जाए ना, then I'll have the equation. But the only problem is I don't know the value of k. So what I'll do, I'll find कि इसका m क्या है, इसका slope क्या है, slope of this line, slope of 5x plus 4y minus 13. So what is the slope? Slope is always a upon b minus a upon b minus 5 upon 4. This is the slope. So what is the slope for this? देखो, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल. जब भी दो लाइन पैरेलल गिवन है उनका स्लोप सेम होता है. इसका स्लोप तो माइनस 5/4 है. इसका स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखना सबके सब, एक्स का कोफिशिएंट ओवर वाई का कोफिशिएंट. सो स्लोप of this line is going to be 1 plus 4k over 2 minus k minus, okay, ये a over b. but इन दोनों का slope सेम होना है because they are parallel. So I'm going to just put equals to minus 5/4, and minus can get cancelled out. I'll shift things from here to there. तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 minus 5k, ये उधर जाएगा 4 plus 16k, एंड देन 5 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 21 इक्वल्स टू 21 के 6. तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 over 3 2 जा 3 7 जा 2 over 7. क्या आपका कितना है कि 2, आपके पास k की वैल्यू आ गई. पर आपने बोला था इसकी इक्वेशन क्या है, ये है. अब k की वैल्यू इसमें उठा के डाल दो, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इस लाइन की इक्वेशन होगी. ओके,
तो ये हेल्प करने के लिए दिया था कि ये इसके पैरेलल है ताकि हमें m मिल जाए उससे. Okay, thank you guys for understanding the video. I hope you guys got something. If there are any other question I can help you guys with, please free to contact, and we can solve questions on Friday as well. Have a good day everyone.